we started the chapter application of derivative. They have four topics. One is rate of change, exercise 6.1. Tangent normal is exercise 6.3. And the exercise 6.2 is increasing, decreasing. 6.3 is tangent normal. 6.4 is approximation. And 6.5 is maximum, minimum. We started increasing decreasing. हम increasing and decreasing start कर चुके हैं. Okay, we already started increasing and decreasing. They belong to first book. This is the first book, exercise 6.2. Exercise है that is 6.2 exercise of increasing and decreasing जो already start कर चुके हैं. In yesterday class we discussed the type 1. Type 1 is show that. जैसे if you see in your book, the first question is show that. Second question is show that. Third is show that. Fourth question is find the interval for which they are increasing and decreasing. It is type 2 जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो the total questions are 19. आज हम NCERT लगभग पूरी कंप्लीट कर लेंगे. So we have 19 question in NCERT. Okay, the first question from 19 question. So we start today. We start type 2. Okay, हम आज से type 2 भी शुरू करेंगे. So this is the yesterday class. ठीक है, ये हम already class में discuss कर चुके हैं. 1 minute बस, just 1 minute. I'm taking attendance, but just 1 minute. We're taking attendance. Okay, but just we start. Okay. So in yesterday class we discussed the type 1. Okay, we discussed the type 1. But in type 1, what is the type 1? Type 1 is if the given the question is this is the interval. Type 1 they are saying that this is type 1. The type 1 is what? The type 1 is this one. They go, this is type 1. In type 1 they are saying show that the function is increasing or decreasing. They given one interval and then on that interval it is increasing and decreasing. This is first question show that fx equal to this are increasing on this. Okay, this is a type 1 and the type 2 is the fourth question. Fourth question is find the interval. ठीक है, देखो this is the book RD. ये RD की book है. Okay, हम RD भी यहाँ क्लास में करेंगे. Total 10 questions are in RD. Okay, these are the parts जो आज हम homework लेंगे. तो this is the find the interval. This is type 2. Type 1 is show that the function is increasing and decreasing. And this is type 2. Okay, so today we start type 2 exercise. Okay, we are starting type 1 and type 2. So type 1 we repeat again. We again repeat type 1 question. So if you see type 1 question, so we start again the type 1 question. Question number 7. This is type 1 question. In type 1, they are saying show that this function is increasing for all the values of x. Okay. Question number 9 is again type 1. Type 1, they given a function, they given a values of y, and for that interval you prove it is increase or decrease. This is question number 9. They are saying prove that y equal to this is increasing function on theta. Okay. So we start the 9th sum because this is the 9th question. He says in 9th question they are saying y equal to 4 sine theta. 4 sine theta upon 2 plus cos theta minus theta. So what is type 1? In type 1 they given y and they given the interval. For that interval you check it is increasing or decreasing. But in type 2 they are saying कि find the interval. So there are the two type of question. One is type 1, that is their given interval, and then for that interval he says prove it is increasing and decreasing. Okay. For that interval they want to prove it is increase or decrease. But in type 2 they are saying that this is find the interval. So today we discuss type 1 question. So type 1 question is very easy. They are on the basis of slope we decide it is increase or decrease. This is the slope. M is dy by dx. Okay. In yesterday class we already discussed that M is known as dy by dx. So if the slope is positive then the curve is increases. The simple story is if the f dash x comes greater than 0 then we say it is increase. But if f dash x is less than 0 then we say function is decrease. But if they shows both the sign plus and minus then we say it is neither increases or not decreases. Okay, so on the basis of slope we can decide it is increase or decrease. So first we find dy by dx. Now how we find the dy by dx? Simply we apply division rule. So what is the division rule? Numerator upon denominator जो rule होता है that is denominator का square means 2 plus cos theta का whole square. 2 plus cos theta into derivative of 4 sin theta is 4 cos theta
minus 4 sin theta into differentiation of this. देखो differentiation of 2 is 0. Cos theta का derivative is minus sin theta. Then theta is 1. The derivative of theta is 1. Now we start the differentiation. देखो this is 4 to the 8 cos theta plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta. This is 4 sin square theta upon 2 plus cos theta का whole square minus 1. This is simple. We apply division rule here. Division rule is numerator upon denominator. अगर आप regular class ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत benefit होगा. Only in type 2 we have 10 question. और surprise ये है कि 10 के 10 question किसी एक book में नहीं है. तो आपके tuitions में से ज्यादा यहाँ questions होंगे. अगर आप आके देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई profit हो रहा है. ठीक है? तो never miss the classes. Be regular with the classes. देखो this is 8 cos theta. Now we are taking 4 common here. If we take 4 common, then we have sin square theta plus cos square theta. That is 1. But अभी भी मैं उस stage में नहीं हूँ. I'm not on that stage. It is plus or minus. Because on the basis of plus and minus, we can decide it is increase or decrease. The slope is positive, then it is increase. If the slope is negative, then it is decrease. Now, what is the slope? Slope is dy by dx. So for that interval, it is positive or negative. I cannot decide. I'm not in the position कि we say it is plus or minus. Okay. Then we simplify it. मुझे उस स्टेज तक सिंपलीफाई करना है जिस स्टेज तक मालूम ना हो जाए कि प्लस है या माइनस है. नाउ दिस इज 2 plus cos theta whole square. This one is 8 cos theta plus 4. Now cross multiply and the squaring, open the square, minus 2 to the 4 cos theta. देखो this 4 is cancelled with this 4. Okay. Now what we have? Now देखो this is 8 cos theta minus 4 cos theta. 8 cos theta minus 4 cos theta. That is 4 cos theta minus cos square theta. Minus cos square theta upon this is 2 plus cos theta ka whole square. So this is your dy by dx. This is your dy by d theta. Sorry, dy by d theta, because on the basis of theta you differentiate it. Okay, now you get this answer, but the problem is that how we decide it is plus or minus. So देखो, we are taking cos theta is common. If you take cos theta is common, then you have 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta का whole square. Now you have some technical problem here. Okay, this is clear that whole square is always positive. Now I'm rub this thing. ये मैं rub कर रहा हूँ because in yesterday class we discussed this thing कि slope is positive, then the curve is increases. The slope is negative, then the curve is decreases. देखो अब मुझे डिसाइड करना है कि it is plus or it is minus. देखो 2 plus cos theta whole square, it is always positive. Now one thing is that here the cos theta lies between minus 1 to 1. The maximum values of cos is 1. The minimum values of cos is minus 1. Okay, the maximum values of cos is 1 and the minimum is minus 1. So if you put the maximum values of cos, if you put the maximum values of cos, if you're putting 1 here, then 4 minus 1 is 3. That means 4 minus cos theta is never negative because cos never exceeds 1. And it becomes negative when it is bigger than 4. But cos तो always 1 से less होता है, तो that means 4 minus cos is always positive. ठीक है? Therefore 4 minus cos theta is always less greater than 0. ये कभी भी negative नहीं हो पाएगा. इसका मतलब एक टर्म बच गई. This is always positive. This is always positive. The one term is remaining. That is cos theta. Now 0 to pi by 2 is the first quadrant. In first quadrant, cos theta is positive. So because theta is given, it is lies between 0 to pi by 2. Therefore, cos theta is greater than 0. Hence, your function is having slope is greater than 0. Therefore, fx is increases. fx की जो values है वो increase कर रही है. If anyone have doubt, अगर किसी को कोई डाउट है तो दे कैन चैट विद मी और वो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकता है. ओके, एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज कॉपी डाउन ऑल द थिंग. ये चैप्टर बेस्ड ऑन नोट्स है, तो देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कॉपी इट, ऑल द क्वेश्चन विल कॉपी. अम्नी, यू हैव एनी डाउट? Amni beta, 111431. You can any doubt No, here? sir. No, sir. If anyone have any doubt, then they can ask. Yes, this is देखो, this on the basis of dy by dx we decide it is increase or decrease. So first we find dy by dx. So for that we differentiate this one.
We take whole square here. We apply division rule here. Then when it come here, so the problem is that now we decide it is plus or minus. So on the position of this, we cannot decide it is plus or minus. So we take LCM. And that position, we have three terms. One is 2 plus cos theta whole square. The second one is 4 minus cos theta. The third one is cos theta. This is whole square. It is clear it is always plus because whole square hai. Now the remaining is 4 minus cos theta. The values of cos is maximum is 1. So if they have maximum values, so 4 minus 1 is 3. Okay, so this is always positive. ये कभी negative हो ही नहीं पाएगा because the maximum values of cos is 1. So if you put here 1, so 4 minus 1 is 3. That means it is plus. So cos है maximum values is 1, तो 4 से exceed तो कभी करेगा ही नहीं. That means ये always positive. Okay, this is always positive. So that remaining is cos theta, and cos theta in the first quadrant it is positive. Therefore, it is always increases the. Okay. Now we start type 2. देखो मैं type 2 start कर रहा हूँ. Type 1 is this one. देखो type 1 जो होती है, they are saying show that the function are increases. Now type 2 is very important question. Type 2 ही बोर्ड में आती है. देखो type 2 में they are saying in type 2 they are saying if it is increase or decrease. ठीक है? In type 2 they are saying it is increases or decreases. ठीक है? 1 minute, sorry. In type 2, they are saying it is increases or decreases. So if you see question number 4, they are saying find the interval for increasing and decreasing. And in type, again they are saying same. Okay, again the same question. 6 question is again same, find the interval. So we start type 2. अब मैं type 2 start कर रहा हूँ. Okay, in type 2 is very important. आपको कभी भी डाउट आए, you can ask me. ठीक है, आप चैट कर सकते हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. तो टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. इन टाइप 2 वी हैव टोटल 10 क्वेश्चन. तो आज मैं आपको पहला क्वेश्चन कर दूंगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ उसको प्लीज कॉपी नहीं करना. यू ओनली सी दिस क्वेश्चन कि मैं कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन. इन टाइप 1 देखो, दिस इज फाइंड इंटरवल. क्वेश्चन ये है फाइंड इंटरवल for which function is increasing and decreasing. This is type 2. This is type 2. Here saying कि आपको वो x की वैल्यूज खुद से निकालनी है जहां फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है. You find the values of x for that the function is increases and decreases. अब देखो मैं इसमें कैसे स्टार्ट करता हूँ. How we start this question? We first find f dash x. सबसे पहले इसमें f dash x निकालते हैं. We always find f dash x. Okay, what is f dash x? That is the derivative of f dash x. Differentiation इसके बड़े आसान होते हैं. The x cube derivative is 3x square by 3 minus 10x by 2 plus 6. Simply we differentiate this one. The first step we always differentiate. Okay, in first step we always differentiate the question. Differentiation means simple derivative of that. So this 3 is cancelled with this 3, 2 is cancelled with 10. Then we get x square minus 5x plus 6. उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग करते हैं. स्प्लिटिंग इज ऑलवेज पॉसिबल. इसकी स्प्लिटिंग ऑलवेज पॉसिबल होगी. अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो बच्चे ने हिडन टैलेंट दिखा दिया है. स्प्लिटिंग इज ऑलवेज पॉसिबल. x minus 2 is x minus 3. ये हमेशा स्प्लिट होगा. देखो, then first step we always differentiate. In first step we differentiate and after that we split it. Okay, and then we decide. Actual question is that when it is increase or decrease, find the values of x. Okay, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. When the question is when the graph is increases and then after that decreases. तो देखो 1 to 2 the graph is increases and 2 to 3 it is decreases. So when they start decreasing from increasing, when they start the decreasing, then 2 is the turning point. 2 is the turning point. देखो at 2 they turn their direction. यानी कि at 2 that they turn their direction. If you plot a tangent at 2, then the slope becomes 0. Okay, at that time slope becomes 0. यानी कि if you put slope is 0, यानी कि if f dash x you put 0, then you get the values of x जहां वो ग्राफ अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. तो 2 is the turning point. तो बहुत सिंपल होता है. We put a heading here for increasing and decreasing. Put f dash x is 0. So if you put f dash x is 0, x minus 2, x minus 3 is 0, you get two values of x. Again start. देखो again मैं आपको repeat कर रहा हूँ. The fx is given. F dash x first we find f dash x. After that for increasing and decreasing we put f dash x is 0. We are putting always f dash x 0. These are that point जहाँ कर्व ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है. यानी कि these are the critical point.
These are the critical point. These are the turning point. In different book, they are given different name. These are the turning point or these are the critical point. Okay. After that, we put f dash x. उसके बाद फिर से हम f dash x लिख देते हैं. What is f dash x? X minus 2 and x minus 3. This is the f dash x. Okay, this is your f dash x. Okay, we plot a number line for it. Now we plot a number line. Number line start from minus infinity to plus infinity. Okay, we put the values जो हमें x की values मिली हैं. We got the values of x is 2 and 3. So we put the values 2 and 3 here. 2 will come before 3. Okay, 2 is the lesser than 3. Therefore, 2 we first plot. Then after that we plot 3. Now we have 3 portion here. One portion, second portion, third portion. We have 3 portion. So we take any portion. Generally we take after 3. Okay, your f dash x is this. Your f dash x is, you take after that 3, you take any values 4. For example, we are taking 4 here. तो अगर मैं 3 के बाद 4 लेता हूँ and you put here, देखो 4 minus 2, 4 minus 3, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है. मेरा मतलब यह है कि आंसर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है. बिकॉज द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस वी कैन डिसाइड इट इज इंक्रीज और डिक्रीज. तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस. आंसर ऑलवेज ऑल्टरनेट आते हैं. एक बार दोबारा से देखो, मैंने ये डिसाइड कैसे करा प्लस माइनस. देखो माइनस इंफिनिटी टू 2 यू टेक 0. अगर मैं माइनस इंफिनिटी और 2 के बीच में 0 लूंगा और यहाँ रखूंगा तो 0 minus 2 is minus, 0 minus 3 is minus, minus into minus is plus. आंसर ऑल्टरनेट चलते हैं. द फर्स्ट इज प्लस, देन सेकंड इज माइनस, थर्ड इज प्लस. कुछ बच्चे ऐसे भी लर्न कर लेते हैं कि जो f dash x में x स्क्वायर का साइन होता है, जैसे f dash x का में x स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस, वो यहाँ आएगा. ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको मालूम होना चाहिए why it is plus. ठीक है. नाउ फॉर इंक्रीजिंग, your interval is minus infinity to 2 union 3 to plus infinity, and for decreases, because for plus sign it is increase and for minus sign it is decrease. So this is the type 2. Again you see type 2. In type 2, first we differentiate the question. After that we split it, and after splitting we put 0. For 0 means we find the interval for which they are increasing and decreasing. We put f dash x 0. We got the values of x. From where we got the values of x, that values we plot on the number line. On the number line we can decide it is plus or minus. Then we have answer. Okay. Now you start a type 2 question. You write down type 2 and put first question. देखो आपको ये fifth question नहीं लिखना है. You start as a first question. You find this is the first question. First question का first part, because ये notes हैं. They are total 10 question in this. First question के 2 parts हैं, बाकी second के 8 part है, बाकी किसी के part नहीं है. तो first question का first part you start fifth question. Okay. और जिसका हो जाएगा they raise your hand. तो start fifth question. I'm waiting for you. You start fifth question, the same method for fifth question as we apply here. I'm waiting. Anyone done? Please raise your hand. अमन मोदक, बेटा कर लिया? मैं अनम्यूट नहीं करूंगा आपको. यू कैन ओनली अनम्यूट. आप चैट कर सकते हो. यस, अमन मोदक सेइंग कि सर कर लिया है. ओके, रेज योर हैंड. जो कर चुके हैं दे रेज योर हैंड. मैं भी बोर्ड पे करूंगा. यस, सोहम जैन, गुड बेटा. सोहम जैन ने हाथ ऊपर किया है. सोहम जैन इज द फर्स्ट वन. Jivyasha of 12th E, they are also done. Okay, so many students are now done. 7 students, they raise your hand. 7 students are completed this question. Yes, 8, good. बेटा बहुत slow चलेंगे. You
प्लीज कोऑपरेट विद मी। मैं आपको टोटल कराऊंगा, यू कैन कंपेयर विद योर ट्यूशन, हम उससे एक्स्ट्रा ही कराएंगे, कम नहीं कराएंगे। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन दिस। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। योर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द इंटरवल फॉर विच देयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो एनसीईआरटी में ओनली वी हैव टू टाइप क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी होमवर्क ले सकते हो, ठीक है। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, it says find the interval for which they are increasing and decreasing। ठीक है, दे आर सेइंग फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट वी फाइंड f डैश x। सबसे पहले हम f डैश x निकालते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप वी फाइंड f डैश x, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। दैट वेरी इजी। we find the derivative of this in the first step, we find the derivative of this and then after that split, ठीक है। after that we split, so we take 6 common first, x square minus x minus 6, then split। splitting इसकी 100% होगी, okay, x minus 3 x plus 2, that is a splitting of this, okay। after that we put for increasing and decreasing, for increasing and decreasing put f dash x is 0। so when we put f dash x is 0, that is 6x minus 3 x plus 2, we are putting 0, ठीक है। we put this is 0, then we get the values of x is 3 and values of x is minus 2, then again we write f dash x। उसके बाद फिर से हम f dash x लिखते हैं, then plot the number line। उसके बाद हम नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं। नंबर लाइन स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, द वैल्यूज इज माइनस 2 and 3, okay। if you plot the values minus 2 is before, because minus 2 is lesser than 3। देखो अगेन, देखो f dash x निकाला, उसके बाद फॉर इंटरवल इसको 0 पुट करा, 0 पुट करके मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई, उन वैल्यूज को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करा, and then we are starting ki how it is plus। देखो x square sin of x square is plus, the sin of x square is plus, तो इसका मतलब प्लस आएगा, but that is the method, simple method, okay। but we check how it is plus। देखो minus 2 to minus infinity takes 0, sorry minus 7 minus 8 minus 9, 0 नहीं आएगा, 0 minus 2 और 3 के बीच में आएगा, तो minus 7 it is negative, that means minus, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, आंसर ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस plus minus plus, so for increasing the answer is minus infinity to minus 2, 3 to plus infinity, and for decreases minus 2 to 3, okay। any problem to anyone? Okay, then we start question number first ka second part। this is the first part of the question, we start second part, this is first part of the question, now we start second part। first question के दो parts है, okay। तो second part is, प्लीज सेकंड पार्ट देखो, दिस द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर बुक का है, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, 6 का सी पार्ट। दिस इज fx इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ओनली 10 क्वेश्चंस आर हियर। तो जो बच्चे क्लास मिस करते हैं उनको ये 10 क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे, दीज आर द 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट सेकंड पार्ट, आई एम गिविंग अगेन 5 minutes to you, 4 minutes to do। Please start this question। fx equal to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1। Please start this question। When you done this question, raise your hand, or any problem then you can ask by the help of chat। You have two options, by the chatting you can ask any problem। We have two type of question, and first type 2 में type 1 that is given for given interval prove it is increasing or decreasing, type 2 they are saying find the interval,
एंड फाइंड द इंटरवल, यही बोर्ड में आता है। इसके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी डन। सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस आएगा भी आपको मालूम चलेगा। देखो वी स्टार्ट नाउ सेकंड पार्ट, प्लीज आप कॉपी करते रहना, ठीक है। f डैश x, दिस इज माइनस 6x स्क्वायर minus 18x minus 12. Then we take minus 6 common here. Okay, if you have any doubt तो please you can unmute yourself, अपने आप को unmute कर सकते हो। We have an option of unmuting, ठीक है। But please आपको ध्यान रखना है कि you are in class, to meet the decorum and discipline the class, because this is 3x plus 2. Now minus 6x minus 1 x minus 2. This is the splitting of this. ये मैंने इसको split कर दिया and now we put equal to 0 for increasing and decreasing. तो simple सा concept है, we have steps. सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं। We always find first f dash x and after that f dash x we split and then we put 0. Okay, when we put 0 then we get the values of x. देखो now we are putting 0 so we get the values of x is 1 and 2. Okay, now again अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, they done a mistake कि उनको लगता है कि -6 उस साइड जाके 0 हो गया है। They are thinking right कि वो -6 जाके उस साइड 0 हुआ है, but that after that f dash we put 0 then it is -6 is 0. But in number line we always put the values in f dash x. So in f dash x the -6 is present. Actually -6 sign is also play here role because minus sign भी है उसके अंदर, तो they play role. Now we put again minus infinity and then infinity. We plot the number line 1 and 2. Now you take any portion from 2 after 2, 2 to after 7, 9, 10, 15. 15 if you put here, so it is plus, but it is minus. So minus into plus, minus into plus, minus. So answer is alternate. So if you noted that in last question we get plus, minus, plus. But here we get minus, plus, minus. सब स्टूडेंट एक लर्न कर लेते हैं, ट्रिक मान लेते हैं कि जो f dash x में x का साइन है वही साइन पहला आता है। Okay, so for increasing the interval is 1 to 2 and for decreasing the interval is minus infinity to 1, you'll 2 to plus infinity. Yes, Aman, you have any doubt? Aman beta, any doubt? सर सॉल्व हो गया। Okay बेटा, good. ठीक है, देखो बेटा अमन इज वेरी गुड, इसने अपने आप को अनम्यूट किया, बट हाँ बोलो बेटा। देखो -6, अच्छा हाँ, यस गुड बेटा, गुड। ये +3 होगा तो इंटरवल बदल जाएंगे। यस, देखो एक बच्चा है जो क्वेश्चन देख रहा है, गुड। -2 पहले आएगा, -1 यहीं आएगा, लेकिन आंसर अभी भी ऑलमोस्ट वही रहेंगे हमारे। यस, गुड बेटा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, so this is your first question. Now second question has 7 parts. सेकंड क्वेश्चन है 7 पार्ट्स। देखो अगेन हम क्या करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट वी फाइंड f dash x। f dash x निकालने के बाद हम इसमें स्प्लिट करते हैं, देन आफ्टर दैट वी पुट 0। व्हेन वी पुट 0 वी गेट द वैल्यूज ऑफ x, देन वी प्लॉट ए नंबर लाइन। फ्रॉम द नंबर लाइन वी कैन डिसाइड इट इज प्लस और माइनस। On the basis of plus and minus, we say it is increase or decrease. This is a simple concept of type 2. Now we are taking type 2 questions. Please देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी एक बुक के अंदर नहीं है, ठीक है। This is your second question जिसके 8 पार्ट हैं। We have 8 part of second question और ये सारे NCERT में नहीं है। They are from Exemplar और RD और NCERT। तो जो बच्चे क्लास मिस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Find interval. Again the question is same for increasing and decreasing. This is the second question. We have 8 part for this. Fx is x by 2 plus 2 by x. X is not equal to 0. The second part, fx equals to x into x minus 2 का whole square. The third part is fx equals to 4x square plus 1 upon x. X is not equal to 0. The fourth part is, please आप इसको लिख लो, write down, आप लिखना शुरू कर दो। This is fifth part, fx is x cube plus 1 by x cube. X is not equal to 0.
ये 10 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 4 आर अलजेब्रिक एंड 6 आर ट्रिगो। अब ट्रिगो का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो बच्चा क्लास मिस करेगा वो बहुत लॉस में रहेगा। दिस इज फिफ्थ पार्ट। Now we start sixth part. Fx equals to x minus 1 whole cube, x minus 2 whole cube. X minus 1 whole cube, x minus 2 whole cube. This is your sixth part. Then seventh part is fx equals to 3x to the power 5 by 2 minus k 5 x is to power 3 by 2. And the eighth and the last part is fx equals to x4 minus 2x square. So these are the 8 parts. ये 8 parts है। अब इनको प्लीज कॉपी करो। Then we start first part. मैं तो इसे 4-5 parts कर दूंगा and the 4-5 parts are remaining homework. So your homework today homework is you complete your NCERT 6.2 exercise का कल हम डाउट लेंगे। सबसे पहले first we take this doubt of 6.2 exercise and the doubt of these parts. Okay, these are the 8 parts. They are a homework. इनमें से कुछ पार्ट्स मैं भी कर रहा हूं। देखो फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज fx इक्वल्स टू x by 2 plus 2 by x। तो इसमें मेथड क्या होता है? फर्स्ट वी फाइंड f dash x and then after that we split it, then we put 0. So working is same. We find f dash x. So f dash x is x by 2. X by 2 का डेरिवेटिव is 1 by 2. Now 1 by x having x to the power minus 1, then minus 1 minus 1 minus 2, that means minus 2 by x square. Okay, the derivative of 1 by x is minus 1 by x square, so that is minus के 2 by x square. Now we take LCM here. So LCM is 2x square, then x square minus 4. अब the simple thing, यहाँ splitting नहीं हो रही है, यहाँ formula use हो रहे हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में स्प्लिटिंग नहीं होगी। यू यूज फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर aq माइनस b क्यूब और डिफरेंट कांसेप्ट, बट स्प्लिटिंग इन क्वेश्चंस में नहीं होगी। स्प्लिटिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन था बस। Now we have a formula here, x square minus 4 is you can use a minus b or a plus b. So this is the difference from first question. In first question here we split here, but now in this question we are using formula aq minus b cube or a square minus b square. Now देखो f dash x मैंने निकाल लिया, split कर लिया, then we put for increasing and decreasing. For increasing and decreasing we are putting f dash x is 0. If you put f dash x is 0, then x minus 2, x plus 2 upon 2x square, we are putting 0. Then we get the values of x is 2 and minus 2. We get the values of x is 2 and minus 2. Now we plot the number line. Number line is minus infinity to plus infinity. We have two values, minus 2 and 2. Okay, the sign of x square is plus, that means ये plus आएगा, but हम ऐसे decide नहीं करते हैं. We take another value. After 2 you take 4, 5, 6, 7. 7 रखो. Then we put 7 here. 7 minus 2 is plus. 7 plus 2 is plus. That means plus. Plus minus plus. So for increasing, the answer is minus infinity to minus 2. Always use open interval. Never use close interval. Why we are not using close interval? मैं आपको बताऊंगा. This is minus 2 to 2. But the problem is here. The question is 2 by x. 2 by x means x cannot be 0. Because if you put 0 here, तो something upon 0 become not defined. और but 0 तो आपकी नंबर लाइन में आ रहा है, minus 2 2 के बीच में 0 आ गया और 0 तो आप ले ही नहीं सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 आ ही नहीं सकता है, तो 0 आपको यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर बच्चा 0 एक्सक्लूड नहीं करेगा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। वी एक्सक्लूड 0 here, we exclude 0. Why? Because 0 is not present in the question. 2 by x means x cannot be 0. Okay, please copy down this question, and if any problem, then you please unmute yourself or chat with me. Please copy down this question. I am giving 2 minutes. Chirag, 12th F class 13178. Any doubt, beta? No sir. Good. जब बच्चा नो सर बोलता है, यस सर बोलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। तो प्लीज रिस्पॉन्ड व्हेन आई से योर नेम, आई अनाउंस योर नेम, देन यू गिव द आंसर। देखो ही इज सेइंग कि नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम स्टार्टिंग थर्ड पार्ट। मैं इसके अल्टरनेट पार्ट करूंगा, तो थर्ड पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे क्लास। ठीक है, थर्ड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। 4x² + 1 / x। The
method is same. First we differentiate, then after that we put 0. This is type 2 questions. So now this is the question. Third part. ये पार्ट सारे आपके होमवर्क है. Please try at home. आप घर पे ट्राई करिएगा. Okay, now we are starting the third part. The third part is fx equals to 4x square plus 1 upon x. So first we differentiate it. In differentiation, we apply the division rule. X का square, x as it is, into derivative of numerator, that is 8x minus 4x square plus 1 into x का derivative is 1. Open the bracket. We have 8x square minus 4x square minus 1 upon x square. Now 8x square minus 4x square is 4x square. So 4x square minus 1 upon x square. Now it is 2x minus 1 and 2x plus 1 upon x square. So first we find f dash x, then we differentiate it. After that we put 0. So now we are on the step, we put 0. So we writing the heading for increasing and decreasing. Put f dash x is 0. So if you put f dash x is 0, so 2x minus 1, 2x plus 1 is 0. You get the values of x is 1 by 2 and minus half. आपके पास दो वैल्यूज आ गई है x की. One is half and the second is minus half. Now we plot the number line. Before plotting the number line, we write again f dash x. मैं दोबारा से f dash x लिख रहा हूँ. 2x minus 1, 2x plus 1 upon x square. If you put number line, on number line you get minus half and half, plus infinity and minus infinity. Now after half, you take any values larger than other than half. If you take otherwise this x square is plus, we have a plus sign. But half के बाद कोई value लो 7, 8, 9, 10. If you put 10 here, so it is plus, plus into plus, plus, then minus, then plus. So for increasing, you have the answer minus infinity to half, union half to plus infinity. And for decreasing, the minus half to half. But again the same problem, 0 cannot be here. 0 आप रख ही नहीं सकते हो, तो आपको 0 अपने आंसर में से गायब करना होगा. Please copy down this question. And the rest part is your homework. आप ट्राई करोगे, अगर नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व करेंगे. Your homework is NCERT and these are the questions. Any problem to anyone? Sanskar, beta 12G class, 11323. Any doubt, beta? Okay, इसका वो वर्क नहीं कर रहा है. नो बेटा, नो प्रॉब्लम. माइक वर्क नहीं कर रहा है आपका, कोई बात नहीं. देखो थ्रू चैट यू कैन ऑल्सो. अमन मोदक सर नंबर लाइन पर ना करें टेबल. हाँ, कुछ बच्चे इसमें टेबल भी बनाते हैं, बट टेबल इज नॉट ए करेक्ट मेथड. टेबल से भी कर सकते हैं, बट टेबल आगे मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा या टेबल पॉसिबल नहीं होगी. तो नंबर लाइन इज द इजी मेथड. ओके, मतलब टुडे फॉर टुडे इनफ. ये आज के लिए काफी है. ओके, तो कल हम मिलेंगे दोबारा से. बट एनसीईआरटी एंड दीज होमवर्क, दीज आर द होमवर्क. तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ. प्लीज आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो इससे पहले. बेटा बाय.